Hanji, welcome back to my YouTube channel. So, as in the previous video, we have learned about the biography of T.S. Eliot. In today's video, we are going to learn about the works of T.S. Eliot. As we know that there are too many writers in our syllabus and each writer has written many of works. So it is very difficult to remember the works of each and every writer. So that's why I always try to create one story, one trick in order to remember the works of each and every writer. So to learn the works of T.S. Eliot, I have created one story I will share with you. Okay, so let's start. So first is about the poetry written by T.S. Eliot. So the first poetry collection is Prufrock and Other Observation, published in the year 1917. And the most important work of this collection is the love song of J.Alfred Prufrock. Okay, this work is very important. And next work under this collection is Portrait of Lady. Next is Preludes, Rhapsody on a Windy Night, Morning at the Window, The Boston Evening Transcript, Aunt Helen, Cousin Nancy, Mr. Appling's Hysteria, and other poetry collection is Poems 1920. Under this collection, the important work Gerunction, Sweeney Erect, A Cooking Egg, The Hippopotamus, Whispers of Immortality. So please remember all the works, okay? That I have underlined. Hanji, so another collection is aerial poems. Under this collection, first work is Journey of the Maggie, published in the year 1927, A Song for Simeon, 1928, Animula, published in the year 1929, Marina, published in the year 1930, Triumphal March, 1931, Cultivation of Christmas Tree, published in the year 1954. And next is the most important work of T.S. Eliot. जिस वर्क के लिए उन्हें जाना जाता है, उनका मास्टरपीस वर्क द वेस्टलैंड, published in the year 1922. Okay, and other important work is The Hollow Man, published in the year 1925. एंड ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी अपीयर हुआ था. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस वर्क. And next are the four quartets, published in the year 1943. Under this, four poems come. First is Burnt Norton, 1941. Second is East Coker, 1940. Third is The Dry Salvages, 1941. And fourth one is Little Gidding. So under this collection, four poems appear. So that's why it is known as four quartets. And other important work is Ash Wednesday, published in the year 1930. And next is Old Possum's Book of Practical Cats. Under this collection, the most important poem appeared, that is Macavity, the Mystery Cat. Hanji, so next are the plays written by T.S. Eliot. First is Sweeney Agonist. Second is The Rock, published in the year 1934. And next important play is Murder in Cathedral, 1935. Family Reunion, 1939. The Cocktail Party, 1950. Next is The Film of Murder in Cathedral, 1952. The Confidential Clerk, 1954. The Elder Statesman, 1959. Okay. Hanji, so next is non-fiction or essays by T.S. Eliot. First is Ezra Pound, his Metric and Poetry, published in the year 1918, and this is very important work. Second is Tradition and Individual Talent, 1919. Third is The Sacred Wood
Essay on Poetry and Criticism, 1920. Hamlet and His Problems, 1920. The Metaphysical Poets, 1921. The Function of Criticism, 1923. Homage to Johann Dryden, 1924. Andrew Marvell, Shakespeare and Satiricism of Seneca, 1927. For Lancelot Andrews, Dante. Charles Whibley, A Memoir, 1931. Use of Poetry and Use of Criticism, 1933. After Strange Gods, The Idea of Christian Society, Notes toward the Definition of Culture, The Frontier of Criticism, On Poetry and Poets, To Criticize Critic and Other Writings, Poetry and Drama. So please remember all these important works. Okay. Hanji, so this is trick that I have created in order to remember the important works of T.S. Eliot. You can create your own trick also. Okay, and one thing you just have to remember is that the words and sentences जिनको मैंने underline किया है वो उनके works हैं. Okay, and अगर आप इस story को 2-3 बार revise करेंगे तो you can easily learn the works of T.S. Eliot. So let's start. सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ टी एस एलियट जो एक फेमस पोइट एंड क्रिटिक हैं एंड एज पोइट एंड क्रिटिक ही ऑलवेज यूज टू टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ पोइट्री एंड यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म. सो पोइट से हो गया पोइट्री एंड क्रिटिक से क्रिटिसिज्म. एंड उनके फंक्शन क्या थे एज पोइट? To write on poetry and poets and on poetry and drama. And function as critic was function of criticism, frontier of criticism, and to criticize critic. एंड टी एस एलियट के फेवरेट पोइट्स थे द मेटाफिजिकल पोइट्स एंड उनके फेवरेट एसेज थे एलिजबेथन एसेज. फेवरेट प्ले था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स. ओके, एंड हमारे टी एस एलियट के टोटल 9 फ्रेंड्स थे. उन 9 फ्रेंड्स में से 5 तो उनके गुड फ्रेंड थे जो बहुत वेल नोन पर्सनैलिटीज़ थी एंड जो 4 अदर फ्रेंड्स थे वो बैड थे. उनको 4 क्वार्टेट्स भी बोला जाता है. सो द नेम ऑफ 5 गुड फ्रेंड्स वर एजरा पाउंड, एंड्रयू मार्वल जिनका अनदर नेम था लैंसलेट एंड्रयू, चार्ल्स वेबले, दांते, जोहन ड्राइडन. सो एज वी नो that these are the famous names in English literature. Okay, and 4 bad friends, also known as 4 quartets. उनका नेम था स्वीनी एग्नेस्ट, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, एल्डर स्टेट्समैन, मिस्टर एप्लिंग्स. ओके, सो ये 4 फ्रेंड्स थे. दे ऑलवेज विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी. सो दे ऑलवेज यूज टू टॉक अबाउट द इमॉर्टैलिटी. इमॉर्टैलिटी का मतलब होता है परमानेंस, एवर लास्टिंग लाइफ, ability to live forever. Okay. Hanji, so next is about the point of view of T.S. Eliot. So please remember that point of view is also one of the essay written by T.S. Eliot. As I have told you कि जो points and sentences को मैंने underline किया है and highlight किया है वो उनके works ही हैं. Okay. So T.S. Eliot respect tradition and individual talent. That's why he wrote notes towards the definition of culture. He had also given idea of Christian society in which he have argues that church should interfere with the world. So this line truly exists in his essay idea of Christian society. Okay. He also questioned people about what is classic. Hanji, so now we are going to learn about one incident in the life of T.S. Eliot. So first is preludes, means introduction to one of the incident of Eliot's life.
So let's start. So once T.S. Eliot decides to go the wasteland जो located थी in Cathedral. ओके, उसे वेस्टलैंड इसलिए बोला जाता था बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट प्लेस ऑफ वेल नोन पोएट एंड क्रिटिक टी.एस. एलियट वेयर nobody else is allowed to visit except his 9 friends and family. ओके, सो टी.एस. एलियट डिसाइड करते हैं कि वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे वेस्टलैंड में. उस पार्टी का नेम था द कॉकटेल पार्टी एंड द डे वॉज फिक्स्ड एश वेंसडे. एंड उस पार्टी में वो इनवाइट करते हैं अपने 4 बैड फ्रेंड्स को, जिनको 4 क्वार्टेट्स भी बोला जाता है, जिनका नेम मैंने आपको बताया था. एंड आल्सो हिज फैमिली मेम्बर्स, Aunt Helen, cousin Nancy, little Gidding, for family reunion. Okay, so these are the works of T.S. Eliot: Family Reunion, Aunt Helen, Cousin Nancy, Little Gidding, Four Quartets, Ash Wednesday, The Cocktail Party, The Wasteland, Preludes. ओके, एंड उस पार्टी में जो मेन डिश थी वो थी अ कुकिंग एग. ओके, एंड सडनली क्या होता है, उस पार्टी में एक मिस्ट्री कैट आ जाती है, एक रहस्यमयी बिल्ली आ जाती है. उस बिल्ली का नेम होता है मैकिविटी. सो हेयर इज अनदर वर्क ऑफ टी.एस. एलियट, दैट इज मैकिविटी द मिस्ट्री कैट. हाँ जी, सो एवरीवन इन पार्टी वाज शॉक्ड that whom the cat belongs to, as no one unknown is permitted to wasteland. So जैसे मैंने आपको बताया कि उस वेस्टलैंड में कोई भी अननोन पर्सन अलाउड नहीं होता. सो सभी जने शॉक हो जाते हैं कि वो मिस्ट्री कैट मैकेविटी किससे बिलोंग करती है, वो किसकी बिल्ली है. एंड आफ्टर फ्यू आवर्स क्या होता है, जो एक एक्सपेंसिव पोर्ट्रेट ऑफ लेडी होता है वो मिस हो जाता है, उसे कोई चुरा लेता है. एंड जब इंक्वायरी की जाती है, इट वॉज फाउंडेड दैट कैट ऑनर एंड थेफ्ट वॉज प्रूफ्रॉक. ओके, सो प्रूफ्रॉक पर ब्लेम किया जाता है, हु वॉज जेरनशन. जेरनशन का मतलब होता है लिटिल ओल्ड मैन. सफरिंग फ्रॉम हिस्टीरिया. हिस्टीरिया इज टाइप ऑफ डिसीज ऑफ नर्वस सिस्टम. लुक्स लाइक होलो मैन. होलो मैन का मतलब होता है खोखला आदमी. ओके, so please remember all these works. From Prufrock it comes the love song of J.Alfred Prufrock, Gerunction, Hysteria, Hollow Man. So these all are the works of T.S. Eliot. हाँ जी, सो जो 4 बैड फ्रेंड्स होते हैं टी.एस. एलियट के, जिन्हें 4 क्वार्टेट्स भी कहा जाता है, वो प्रूफ्रोक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं बिकॉज एक तो वो विदाउट एनी परमिशन वेस्टलैंड में आया था एंड सेकंड उसने पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को चुराया था. दैट्स वाई वो प्रूफ्रोक का मर्डर करना चाहते हैं. बट जो हमारे टी.एस. एलियट हैं वो बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं. ही फॉरगिव प्रूफ्रोक. बट एक दिन क्या होता है, इन द बॉस्टन इवनिंग प्रूफ्रोक वॉज राइटिंग रैप्सडी ऑन विंडी नाइट. रैप्सडी होता है पार्ट ऑफ एपिक पोइम. ओके, वो लिख रहा होता है, देन ही वॉज मर्डर बाय 4 क्वार्टेट्स इन कैथीड्रल. सो उनका मर्डर कर दिया जाता है 4 बैड फ्रेंड्स ऑफ टी एलियट के द्वारा. ओके, then on the morning at the window, news of murder in cathedral reached T.S. Eliot. and inquiry करने के बाद पता चलता है कि 4 बैड फ्रेंड्स ऑफ एलियट ने प्रूफ्रोक का मर्डर कर दिया है विद द रॉक, एक पत्थर से. सो इन ऑर्डर टू पनिश दैम इट वॉज डिसाइडेड दैट 4 quartets were burnt in east and then dry by little gidding. So you have to remember this line as it is. Okay. So इस लाइन से हमारी ये 5 वर्क्स कवर हो जाती हैं. 4 quartets, burnt Norton, East Cocker, the dry salvages, little gidding. So here is that line. 4 were burnt in east and then dry by little gidding. सो 4 से हो गया 4 क्वार्टेट्स, बर्ंट, बर्ंट नॉटन, ईस्ट
ईस्ट कॉकर, ड्राई, द ड्राई salvages, लिटिल गिडिंग. ओके, सो उनको एज पनिशमेंट बर्न कर दिया जाता है ईस्ट में. ओके, सो T.S Eliot for peace of mind decide for journey to मैगी. सो वो डिसाइड करते हैं एक रिलीजियस जर्नी पर जाने के लिए along with little गिडिंग. बोथ लेफ्ट वेस्टलैंड जो कैथेड्रल में लोकेटेड थी एंड रीच मैरिना. सो मैरिना इज वन ऑफ द पोर्ट. ओके, बंदरगाह, वहाँ पर जा लाइक डॉक यार्ड. देयर दे सा एनिमला, वहाँ पर वो एक एनिमल देखती हैं, हिप्पोपोटमस. ये भी उनके वर्क्स हैं. सो T.S Eliot जर्नी टू मैगी एंड्स विथ ट्रायम्फल मार्च. ट्रायम्फल का मतलब होता है विक्ट्री, जीत. ओके, सो एट द एंड ही डन कल्टिवेशन ऑफ क्रिसमस ट्री. सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. बस आप एक बात याद रखना कि जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स एंड सेंटेंसेस वो उनके वर्क्स हैं. ओके, सो अगर आप इस स्टोरी को 2-3 बार रिवाइज करेंगे सो यू विल बेटर अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्टोरी एंड विल ईजली लर्न अबाउट द वर्क्स ऑफ T.S Eliot. ओके, हाँ जी, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, द मास्टरपीस वर्क ऑफ T.S Eliot इज द wasteland, published in the year 1922. And one thing we just have to remember is that it is 3 words title. So writing it in 2 words is wrong. Okay, and in the year 1922, when the wasteland was published, in the same year, 2 other important works were also published. First is Ulysses by James Joyce, and second is Jacob's Room by Virginia Woolf. Okay, and the original title which was intended was He Do the Police in Different Voices. This title was taken from Charles Dickens' last completed novel, that is Our Mutual Friend. Okay, but the final title selected was The Wasteland. The wasteland is spiritual and intellectual decay of the modern world. The wasteland consists of total 434 lines. It is very important point. Okay, and it was first published in the United Kingdom in magazine The Criterion, and after that in United States in November issue of The Dial, and it was published in the book form in December 1922. Okay. Hanji, so the wasteland is divided into 5 sections. So it is very important to remember the names of all 5 sections. So the 5 sections in chronological order are: first is the burial of dead, that consists of 76 lines. Second is the game of chess, that consists of 96 lines. And third, the longest section is the fire sermon, consists of 139 lines, and the shortest section is death by water, only 10 lines. And last one is What the Thunder Said, consists of 113 lines. So total there are 434 lines in the wasteland. Okay. Hanji, so there are total 7 languages that are used in the wasteland. First is Latin, second is Greek, third is Italian, fourth is German, fifth one is French, sixth is Sanskrit, and seventh is English. Okay, so epigraph of the wasteland is written in the Latin as well as Greek. In Latin language, epigraph is written, and in the Greek language, Greek quotes are inserted in this epigraph. And in the Italian, dedication to Ezra Pound, and some of the Sanskrit words are also used like Datta, Dayadan, Damyata, Shanti, Shanti, Shanti. Okay. सो T.S एलियट ने ये एपिग्राफ लैटिन राइटर पेट्रोनिस के वर्क सैट्रिकॉन से लिया था.
Okay, so please remember this point also. हाँ जी, so next point is very very important, that the poem Wasteland is dedicated to Ezra Pound. In 1922 edition, epigraph was there, poem was there, but dedication was not there. So in 1925 edition, poem was dedicated to Ezra Pound by calling him Il Miglior Fabra, which means the better craftsman. Okay, so this phrase is taken from the Divine Comedy by Dante. So here one point I have noted is that Ezra Pound called Eliot old possum. Hanji, so next is about the narrator of the wasteland, Eliot himself, Fisher King of the great legend, Tiresias, blind prophet. Okay, so next are some of the most important question of the wasteland. First is, what is the opening lines of the burial of the dead? That is the first section of the wasteland. So the answer is, April is the cruelest month. So these lines are allusion to the quote from Geoffrey Chaucer. And epigraph was taken from Petronius. एंड एलन टेट ने इस वर्क को कहा है म्यूजिक ऑफ आइडियाज. दोज आर दी पर्ल्स दैट वर हिज आइज लुक. ये वाली लाइन कहाँ से ली गई है? फ्रॉम द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर. एंड हैंग्ड मैन किसे बोला गया है इस पोइम में? जीसस क्राइस्ट को. एंड अनरियल सिटी बोला गया है लंदन को. ओके हाँ जी, सो जो सेकंड सेक्शन है वेस्टलैंड का, अ गेम ऑफ चेस, ये वाला टाइटल लिया गया है फ्रॉम द प्ले ऑफ थॉमस मिडल्टन, दैट इज द गेम एट चेस. एंड थर्ड सेक्शन द फायर सरमन. सो इसमें एग्जाम्पल ली गई है फ्रॉम बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स. सो फायर किसे बोला गया है? फायर सिंबल्स आर लस्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन. एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो इस पोइम में अपीयर होती है, दैट इज स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग. सो दीज इम्पॉर्टेंट लाइन्स आर टेकन फ्रॉम एपिथैलेमियन बाय एडमंड स्पेंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाँ जी, सो फिफ्थ सेक्शन ऑफ द वेस्ट लैंड, वट द थंडर सेड. द टाइटल ऑफ द सेक्शन alludes टू बृहदारण्यक उपनिषद. ओके एंड इस सेक्शन में ये 3 वर्ड्स आते हैं, दत्ता, दयादम, दम्यता. सो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज 3 वर्ड्स दैट आर टेकन फ्रॉम उपनिषद थ्री-फोल्ड मैसेज ऑफ थंडर. ओके एंड एक और लाइन आती है, लंदन ब्रिजेस फॉलिंग डाउन. सो ये एक चिल्ड्रंस पोइम है. द लाइन मेंशन्ड इन व्हाट द थंडर सेड. And Shanti, Shanti, Shanti. The poem ends with this line. Okay, so these are some of the important questions. Please remember them. Okay. Hanji, so next important work is the love song of J.Alfred Prufrock. The original title of this important work is Prufrock Among the Women, and it was written in the year 1910 and was published in 1915 in Poetry, a magazine of verse on the instigation of Ezra Pound, and after that in the year 1917 it was published in Prufrock and Other Observation. Okay, so the love song of J. Alfred Prufrock पहले एक मैगजीन में पब्लिश हुआ था, इस कलेक्शन में पब्लिश होने से पहले, एंड उस मैगजीन का नेम था पोइट्री, अ मैगजीन ऑफ वर्स. एजरा पाउंड के कहने पर उन्होंने ये वर्क को पब्लिश करवाया था. ओके एंड ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसे हम इंटीरियर मोनोलॉग भी कहते हैं. प्रूफ्रोक बोलता है एंड हम सुनते हैं. एंड इट वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनली पब्लिश्ड पोएम डेडिकेटेड टू जेन वर्दिनल.
हाँ जी, so epigraph of this poem is taken from Canto number 27 of Dante's Inferno. An epigraph is written in Italian language, consists of 6 lines. So इस पोइम में लव सॉन्ग जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम है। एक मिडल एज्ड मैन है जो बाल्ड हेड है, मीन्स गंजा है। So this poem is focused on mind of modern man, a person who is a victim of his own time, emotionally immature and bordering on neurotic. It is through Prufrock, middle-aged male speaker, that reader gains insight into the mind of man. He struggles with love for women he can't approach, and his thoughts fight him, trying to bring him around rational conclusions. By the end of the poem, Prufrock's true emotional distance from the world is made clear. Eliot used ocean to symbolize distance and unsteadiness, and this is how Prufrock approaches social situation and the world at large. Okay, and in this work, use of stream of consciousness technique. The poem is also called Drama of Literary Anguish. हाँ जी, सो टी एस एलियट ने इस वर्क का आइडिया रुडयार्ड किपलिंग की एक पोइम द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल से लिया है। एंड 1941 के अराउंड टी एस एलियट ने एक ऐसे भी लिखा था द रुडयार्ड किपलिंग के नेम से। सो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि शायद टी एस एलियट को रुडयार्ड किपलिंग पसंद होगी। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पोइम इज I have measured out my life with coffee spoons. And starting lines are let us go then, you and I, when the evening is spread out against sky like a patient at raised upon a table. And in the line, in the room of, in the room the women come and go, talking of Michelangelo. So here Michelangelo is Italian painter. एंड येलो फॉग, ये वाला वर्ड यूज हुआ है इस पोइम में। सो येलो फॉग इज कंपेयर टू कैट एंड फॉर्म ऑफ द पोइम इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। एपिग्राफ इज टेकन फ्रॉम दांतेज इन्फर्नो spoken by Guido de Montefeltro. Listener in epigraph is Dante, and themes of this poems are anxiety, indecision, and action, desire, monarchy. Okay, हाँ जी, so other work of T.S. Eliot is Portrait of Lady. So I have mentioned this work because there are many other works of the similar name. Total 3 works of the same name. So please don't get confused between them. So first is the story, The Portrait of Lady by Khushwant Singh. Next is poem, Portrait of a Lady, poem by T.S. Eliot. And third one is The Portrait of a Lady, novel by Henry James. So please remember them and don't get confused between them. Okay, as there are different genres. So other work is Whisper of Immortality. This title is derived from Imitation of Immortality by William Wordsworth. So this is all about the works of T.S. Eliot. आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਗੀ ਐਂਡ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।